Avec ses 16 millions d'habitants, Katmandou et sa vallée concentrent plus de 55% de la population du pays. Une densité qui, combinée à une croissance démographique importante, les traces des séismes de 2015, mais aussi et surtout la pauvreté, rendent encore et toujours difficile l'accès à l'eau pour une partie des habitants. म सधैँभरि यहाँ हातखुट्टा नुहाउनुको लागि हातखुट्टा धुनुको लागि यहाँ आउँछु कहिले कहिले यहीँबाट पानी लिएर जान्छु कपडाहरू धुनु यहीँ ल्याउँछु कपडाहरू धुन्छु अनि अब पानी हुँदैन घरमा अनि खाने पानी जारको किन्छौँ. Comme Talissa, ils sont des dizaines à venir ici chaque jour pour profiter de l'eau du Napuku Pond. Installé aux portes de la vieille ville, ce gigantesque réservoir leur permet d'effectuer les tâches les plus primaires. In Kathmandu, there is about 1.7 to 2 million inhabitants who live here kind of permanently. So the best way to get water is we have a company called Nepal Khane Pani Company Limited. This is the prime concern body to supply water in Kathmandu. But of course, the population growth that has taken over the past decade and two is very high. So they are not able to compete with that population growth. For some people, they go to common wells. They don't have access of water to their house, but there is a common well where everyone from the community go to this well and fetch water. And for others, there are water tanks. They either buy water tanks or they hire it to bring in water for their household or business or other purposes. Chaque jour, c'est la même scène qui se joue dans ce lotissement aisé de Katmandou. Du soir au matin, des camions-citernes investissent la cour de cet immeuble. Car pour remplir le réservoir de 60 000 litres du bâtiment, et ainsi répondre aux besoins de ses locataires, 4 à 5 camions sont nécessaires. Pour chaque opération, il faut compter environ une trentaine de minutes. म चाहिँ अब एक पानी व्यवसायी हो हैन अब हाम्रो चाहिँ सबैको गाडी आफआफ्नो ओनर भए पनि अब हाम्रो चाहिँ सबै एउटै संस्थामा दर्ता छ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी हाम्रो मुहान चाहिँ यही हो देखिरहनु भएको छ अब यसबाट चाहिँ हामीले यो पाइपलाइनबाट बिस्तारै हामीले यहाँ फर्स्ट प्लान्टमा पहिला पानी राख्छौं यसबाट अब हामीले केही फोरहरु काटिसकेपछि त्यसपछि हामीले फेरि यो पाइपलाइनबाट अर्को उतापट्टि फर्स्ट फिल्टर प्लान्ट छ हाम्रो डबल फिल्टर हुन्छ फर्स्ट फिल्टर एन्ड सेकेन्ड फिल्टर त्यो दुईटा फिल्टर कटिसकेपछि त्यसपछि निस्केको पानी चाहिँ हामीले स्टोरेज ट्याङ्कमा स्टोर गरेर राख्छौं र अनि त्यो पानी हामीले मोटरको सहायताले त्यो पानी गाडीमा लोड गरेर पठाउँछौं र अब त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँबाट लगभग 60-64 वटा जति गाडी छ हामीले चाहिँ एक दिनमा 3-4-5 वटा घरमा चाहिँ उसमा अब पानी सप्लाई गर्न सक्छौं त्यो भन्दा बढी त क्यू हुन्छ अब यहाँ पनि पानी छैन. Le tank, c'est justement le système qui a été choisi par le propriétaire de l'appartement où logent les volontaires de l'association Rock'n'Wood. Ce soir, comme tous les 10 jours environ, le réservoir est en cours de remplissage. Donc il y a le camion citerne qui est passé et qui a rempli cette cuve de 3600 litres, ce qui correspond à peu près à 15 €. Donc cette cuve principale, ensuite elle alimente une cuve qui est située sur le toit. Donc la cuve située sur le toit, elle fait 1000 litres et elle est en lien avec un réseau de distribution qui permet d'alimenter toute la maison. On doit activer donc le pompage de cette cuve située en bas jusqu'au rooftop et attendre à peu près 30 minutes le temps que l'eau monte. En fait c'est assez surprenant puisque on se rend compte déjà que l'accès à l'eau c'est pas quelque chose d'évident, surtout dans ces pays-là. Et surtout on n'utilise pas l'eau de manière, on utilise l'eau de manière différenciée en fonction de ce qu'on va faire, c'est-à-dire que ici c'est de l'eau qui est pas potable. Et donc on va l'utiliser surtout pour les sanitaires, etc. Et par contre on va utiliser une autre catégorie d'eau pour tout ce qui va être consommation. Et ça fait vraiment prendre du recul sur la consommation qu'on peut avoir en France, qui elle semble évidente en fait.
In Kathmandu, we are not able to drink tap water because it's not healthy, not good to drink. So lots of people from Kathmandu drinks jar water, and also for cooking as well, and as well as for drinking, they use a jar water because it's purified. I have to pay 50 rupees per 18 liters. So in summer we use almost 10 liter for cooking and for drinking. But in the winter season we use 6 to 7 liters per day. So it's really costly for us. We used almost 10 jar per month. Right now, the quality of water is being really poor, which has been a cause of a lot of disease for the people who are living in Kathmandu. Asia is probably the least in per capita water availability compared to Europe and in Americas. So in that sense, I think the people should understand the value of water is more important. अब सफा होस् र चाहिँ दुर्गन्धित भयो भने बजारमा पनि दूषित हुन्छ र चाहिँ यो एउटा व्यापारको निम्ति मात्रै सफा गर्न लागेको चाहिँ खासै बुझ्दैन। यो पानी चाहिँ यस्तो खोलामा किनभने यस्तो चाहिँ दुर्गन्धित बजारको कुनै पनि यहाँ ढलहरू बनाएर अनि निकास गरेर यस्तो खोलाहरू सफा हुनुपर्छ पानी, त्यो चाहिँ फोहोर एकदमै दुर्गन्धित पानी भइरहेको छ। Débuté en 2015, le projet d'amélioration du bassin de la rivière Bagmati vise à résoudre les problématiques liées aux eaux usées à travers la ville. Sur plus de 7 km, des digues sont en train d'être construites pour améliorer l'environnement des berges et réduire ainsi les dégâts liés aux inondations en période de mousson. Water is a very basic commodity for survival, I think. But now I think even in inner sea water is doing great deals. And for Nepal also we have got pretty good potentials for hydropower development in water, and we're not using that till now. So there's a lot of use. People should really think about making the maximum of it in minimum use. Of course, it should be only consumed as per your need, not as per your desire. It's possible to recycle the water, wastewater, use it for plants, use it for other activities. So when people understand that, of course there's a gradual decrease in the demand of water. I think this is something that people should understand first before going into infrastructure development and building big projects and pipes down the lines. So yeah, once we start from there, I think there's still a long way to go, but eventually the water management system will be nice.